steps कि मुझे पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है and then I have to make the chart. It becomes very, very simple. Okay. Without the techniques, the question is confusing. Okay. So let us go into it. मैं पहले आपको टेक्निक बताता हूँ and then we will construct a, we'll see a question. Let's go. We now move on to our next topic. किसका माइक अनम्यूटेड है? Okay, I've muted that. Which is based on chart projections. Now the questions which we get on this topic are related to construction of a Mercator chart. We are given a particular area. The coordinates of that area are given to us, latitudes and longitude, and we are required to construct a Mercator chart on a particular given scale for that particular area. Now for solving this question, we need to be familiar with the concept of Mercator chart, how the scales are used on a Mercator chart. So let's have a look. Let's see a Mercator chart here on the screen. You can see a small part of the Mercator chart here on the screen. Now a Mercator chart is based or constructed basis two scales. You see one of the scales, the horizontal one, which is at the bottom of the chart, is known as the longitude scale. And you see a vertical scale also on the right side of the chart. The vertical scale is the latitude scale. Now both these scales, the latitude scale and the longitude scales, are different from each other. These scales are not same, they are different from each other. By different we mean that 1 minute of longitude will not be equal to 1 minute of latitude. They will be different from each other. The length of 1 minute of longitude or 1 degree of longitude will be different from the length of 1 minute of latitude or 1 degree of latitude. Now out of these two scales, the latitude and the longitude scale, the longitude scale remains constant throughout the chart. So it basically means that the length of 1 minute of longitude remains the same throughout the chart. You can go to any part of the chart. The length of 1 minute of longitude or 1 degree of longitude will remain fixed. It is not going to change. As far as the latitude scale is concerned, the latitude scale is not fixed or not constant. The latitude scale keeps on changing depending upon where you measure it on the chart. If you are at the equator, the latitude scale is exactly equal to the longitude scale, or you can say when you are at the equator, the length of 1 minute of latitude is exactly equal to the length of 1 minute of longitude on the chart. But as you go in higher latitudes, as you go towards the pole, the length of 1 minute of latitude keeps on increasing. Now both these scales have a relationship between them, and this relationship is given by the formula. The latitude scale is equal to the longitude scale divided by cos of latitude. Now this can be further simplified as the length of 1 minute of latitude on a Mercator chart is equal to the length of 1 minute of longitude on a Mercator chart divided by cos of latitude. So using this relationship, you can find out the length of 1 minute of latitude or the length of 1 minute of longitude if any one of them is known to you. So this is a very important relationship, and we will be using this relationship for the construction of our Mercator chart.
Beta, clear up to here? Any doubts? Very good, beta. Moving ahead. Yes. 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 Sir. Now, before we go into the numerical, let's first understand some of the basic definitions. They really helps us in understanding the concepts as well as in the numerical also. The first definition which we have is the definition of meridional parts, in short also known as MP, Mike Papa. So what are these meridional parts? It is the length of the meridian between the equator and that particular latitude. Meridional parts are reference to latitude. Every latitude will have a meridional parts value. So it is the length of the meridian between the equator and that latitude measured in units of longitude scale. Or you can also explain it in a different wording, in a different way. That is the number of times 1 minute of longitude can be laid between the equator and that particular latitude. So the number of times you can place 1 minute of longitude from the equator up to a particular latitude is what we call as meridional parts for that particular latitude. How do we obtain them? We have a meridional parts table in the Norris nautical tables. So they can be picked up from there. You enter the table with latitude, and for every particular latitude, degrees and minutes, they will give you the meridional parts for that particular parallel. Now moving on to the second definition, that is DMP. It is difference of meridional parts. The DMP, or difference of meridional parts between two parallels, is the length of the meridian between the two parallels measured in units of longitude scale, or you can have a different wording again as we had in meridional parts. This was the first definition explained in one way. You can also explain it the number of times 1 minute of longitude can be laid between those latitudes. This is known as the DMP, difference of meridional parts. The third definition which comes ahead is the natural scale of the chart. Natural scale of the chart is the ratio of distance between 2 points on the chart and the actual distance between them on the Earth surface. So that is the natural scale of the chart. So moving ahead now, beta, we will see a question now. Okay, sir. Now with the basics of chart projections clear in our mind, we are now ready to go into solving of a question. We have the question on the screen now. The question says, construct a Mercator chart from 28 degrees north to 32 degrees north and 015 degrees west to 020 degrees west using a scale of 1:3 million or 3,000,000 in latitude 30 degrees north. So we are required to construct a Mercator chart. The coordinates of the area are given to us, latitudes from 28 to 32 degrees north. The meridians are 015 to 020 degrees west.
The scale is also given. The scale is 1:2 or 1/3,000,000 3,000,000. The scale basically means that 3 million units on the Earth's surface is equal to 1 unit on the chart. Or you can understand it in this way: 3 million centimeters on the Earth's surface will be equal to 1 centimeter on the chart. Now, whenever a scale is given, it will always be referenced to a particular latitude, and in this case, the scale is referenced to 30° north latitude. Now, let's see how do we solve these questions. The first and foremost step which we follow in these questions is to calculate the length of 1 minute of longitude or 1 meridional part on the chart. What is the length of 1 minute of longitude on the chart? Or what is the length of 1 meridional part on the chart in millimeters or in centimeters? Now, why we are calculating 1 minute of longitude? We are calculating 1 minute of longitude because it forms the basic building block of our chart. We have just now seen that the longitude scale, or you can say the length of 1 minute of longitude, remains constant throughout the chart. Whichever part you go, the length of 1 minute of longitude is going to remain the same. So we take this 1 minute of longitude or 1 meridional part as our building block, and using this we construct the entire chart. We cannot use the latitude scale here because if we use 1 minute of latitude, we are aware that in different parts of the chart, the length of 1 minute of latitude keeps on changing, thus making it difficult for us to construct the chart. Now, how do we find out this length? We are aware of the definition of 1 nautical mile. 1 nautical mile on the Earth's surface is basically equal to 1 minute of latitude, and it is of a fixed distance, and that distance is 1852.3 meters. So exactly that same thing is mentioned here. The length of 1 minute of latitude on Earth is equal to 1 nautical mile. That is the definition of a nautical mile, and it is equal to 1852.3 meters. Now let's convert into millimeters. That will be much easier for our reference. So 1852.3 meters converts to 1852300 millimeters. Now we have seen the length of 1 minute of latitude on Earth. Now what is going to be the length of 1 minute of latitude on the chart? Now for this, we have to multiply this distance by the scale of the chart. So 1852300 multiplied by the scale. The scale is 1/3 million. So the same thing is mentioned here, 1852300 multiplied by 1/3 million, and it gives us a value of 0.61743333 millimeters. We have taken it up to a high accuracy because that makes our calculations all the more accurate. Now, once we find out the length of 1 minute of latitude on the chart, now we can use the formula. We are aware of the formula that length of 1 minute of latitude is equal to length of 1 minute of longitude divided by cos lat. So what is the latitude which is used in the formula? It is the reference latitude on which the scale is based. In our question, the scale is based on a reference latitude of 30 degrees north. So that is what we will be using here in the formula. So putting the values here, 1 minute of latitude was 0.61743333 is equal to length of 1 minute of longitude, which we will be calculating now, divided by cos of latitude, which is cos of 30. So using these two values, we get the length of 1 minute of longitude on the chart, and it comes to be 0.534712951 millimeters. Now this is also equal to the length of 1 meridional part
in short known as MP, Mike Papa. One meridional part is nothing but exactly same as 1 minute of longitude. So once we have this length now of 1 minute of longitude, we can easily construct the chart. Beta, have a good look up to here and let me know any doubts coming in. सर ये 3 मिलियन जो है वो मिलीमीटर है राइट क्वेश्चन में, नॉट द सेंटीमीटर एज यू वर सेइंग। बेटा 3 मिलियन तो स्केल है, 1:3 मिलियन। अगर आप सेंटीमीटर्स लोगे तो 3 मिलियन सेंटीमीटर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द चार्ट। अगर आप मिलीमीटर्स लोगे तो 3 मिलियन मिलीमीटर्स विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑन द चार्ट। स्केल का कोई यूनिट नहीं होता। ओके ओके गॉट इट। हमने मिलीमीटर में इसलिए ले लिया है सो दैट वी गेट ए हाई एक्यूरेसी। Okay, beta, great. So let us proceed ahead and see how do we construct the chart now. So proceeding ahead on construction of our chart now. We have just now calculated 1 minute of longitude or 1 meridional part on our chart measures 0.534712951 millimeters. Any doubts, beta, up to here? So this in vertical section angle formula, it is 1.854. Is it the same thing, sir? Height of light divided by 1.85. It is not the same thing, beta. जो VSA formula में है, that is something else. जो nautical mile है, that is 1852.3. Okay, understood. Yeah, that is derived in a different way. वो अलग चीज है. Okay. Okay. Now, since we have the length of 1 minute of longitude, we can easily find out the 1 degree of longitude. 1 degree of longitude is 60 minutes. So this multiplied by 60 gives us 32.1 millimeters. So we obtain the length of 1 degree of longitude equal to 32.1 millimeters. Now you can round off this value to one place after the decimal for millimeters. Now once we have this value known to us, 1 degree of longitude, we can now draw the meridians for our particular area. So let's now draw the meridians. We have to cover an area from 15 degree west to 20 degrees west. So I'm going to first draw the meridian of 20 degrees west. I have drawn it to the left side of my diagram because this is the westernmost longitude. So you can see 20 degrees west meridian coming up. Now to draw the next meridian 19 degree west, I need to know what distance in millimeters should I keep between the two, and that has been calculated to 32.1 millimeters. So keeping a gap of 32.1 millimeters, I draw another vertical line parallel to the first meridian, and that gives me my next meridian of 19 degree west. Now moving further in the same fashion, keeping the same distance, I draw a meridian of 18 degrees west. The distance remains the same, 32.1 millimeters, because the longitude scale is constant. 1 minute of longitude or 1 degree of longitude remains the same throughout the chart. Exactly in the same way, keeping 32.1 millimeter distance, I draw the meridian of 17 degree west. Then keeping the same distance, 16 degree west, and keeping the same distance, I draw a meridian of 15 degree west. So Sir, up do to we here, need to mark scale somewhere like 1 centimeter is equal to this, or we take in centimeters only or construct this chart? नहीं बेटा, इसमें तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है लिखा हुआ उसी को फॉलो करोगे,
The gap is about 3.2 centimeters. So जितना ये हमारी calculation में आया है हम scale से उसी को लेंगे. So no scale needs to be mentioned here. Okay, sir. Okay. ओके अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका चार्ट जो है वो फिट ही नहीं हो रहा आंसर शीट में, अब ये तो इजीली फिट हो जाएगा, बट लेट अस से किसी क्वेश्चन में आपको ये 30 सेंटीमीटर्स आ गया गैप, तो 30 सेंटीमीटर्स तो आप फिट नहीं कर पाओगे. उस केस में आप एक रफ डायग्राम बना के इन डिस्टेंसेस को शो कर सकते हो वहां पे, एंड यू कैन मेक ए रिमार्क सिंस द प्लॉट इज टू बिग फॉर द आंसर शीट वी हैव शोन ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायग्राम. Okay, beta. Great. Okay, okay, thank you, sir. Yeah, let's move ahead. Basically, So we equal have distance all- कुछ भी ले सकते हैं ना सर. I mean, अगर 30 सेंटीमीटर है तो उसका अगर 5 सेंटीमीटर का भी लेके ड्रॉ कर दे तो that will be okay. You can do that. You can do that, beta. Yeah, okay, okay, sir. All the meridians of the required area in our plot, in our diagram. Now we can also show the latitudes. We have to show the latitudes from 28 degrees north to 32 degrees north. So let us first of all draw the lowest latitude, 28 degrees north. I'm going to draw this 28 degrees north at the bottom of the plot. So you can see this green color line coming up. It represents 28 degrees north parallel of latitude. Now the question which I face is how much gap should I be keeping between 28 north and 29 north? Now I do not know what is the length of 1 minute of latitude. So how do we find out the length or distance to be kept between 28 and 29? Now for this, what we do is we find out the difference of meridional part between these two latitudes, 28 degrees north and 29 degrees north. This can be found from the meridional parts table in the Norris table. So if we find the meridional parts for 29 degrees, it comes to 1808.09, and we see the meridional parts for 28 degrees, it comes to 1740.18. The difference between them comes out to 67.91. So the difference of meridional part between 28 and 29 is 67.91 meridional parts. So there are 67.91 meridional parts to be placed between 28 and 29, or you can also say 67.91 minutes of longitude which are to be placed between 28 and 29. Now we know the length of 1 minute of longitude is 0.534712951. So for 67.91 minutes of longitude, the length is going to be 67.91 multiplied by 1 minute of longitude in millimeters, and that gives us a distance of 36.3 millimeters. So if I keep a distance of 36.3 millimeters from my bottommost latitude parallel 28 degrees north, I can now draw the next parallel of 29 degrees north. Now following the same procedure between 29 and 30. Now be careful here. The gap between all the meridians remained the same throughout the chart, but the gap between the parallels of latitude will not remain same. So we will have to calculate the gap between two parallels for every latitude. So let's try to find it out for 29 and 30. Now we get the DMP. The DMP is 1876.67 for 30 degrees north, 1808.09 for 29 degrees. The difference comes out to 68.58. Multiplied with the length of 1 minute of longitude gives us a gap or distance of 36.7 millimeters. So you see it has increased from 36.3. Though the increase is very marginal as far as our resolution is concerned, but still this calculation needs to be shown in the question. The examiner is specifically looking for this distance which you are calculating. So keeping this distance of 36.7 millimeters now,
you can mark off a parallel of 30 degrees north. Now doing exactly the same thing for 30 and 31, we find out the DMP from the meridional paths table. The DMP comes to 69.29. You can see now it has increased from 68.58, and multiplying this value 69.29 with 1 minute of longitude gives us a distance of 37.1 millimeters. So this is the distance to be kept between 30 and 31. So let's keep a distance of 37.1 millimeters and mark off the next parallel 31 degrees north. Moving further between 31 and 32, exactly in the same fashion, DMP comes out to be 70.02. You can see it is greater than 69.29, and multiplied by 1 minute of longitude gives us a distance of 37.4 millimeters. And at this particular distance, we can now draw the parallel of 32 degrees north. So for this beta, keep it clear in your mind. The definition of DMP. DMP is the difference of meridional parts, or number of times 1 minute of longitude can be placed between the two latitude. So once you have the DMP and you have the length of 1 minute of longitude, the distance between any two parallels can be easily calculated. And you can now see the gap between the parallels is gradually increasing as the latitude increases. So we have the full graticule showing the meridians as well as the latitude, and that completes our construction of the Mercator chart. So any doubts in this beta? ओनली ये कंस्ट्रक्ट करके खत्म, कुछ लिखना नहीं है इसके बस. नहीं बेटा, जो लेफ्ट साइड में हमने कैलकुलेशन शो की है, डीएमपी कैलकुलेशन, वही शो करनी है, और ये डायग्राम बनानी है विद ऑल द मार्किंग्स, वेल लेबल्ड डायग्राम दैट टेक्स केयर ऑफ द आंसर. सर इसको एज पर स्केल करना है सर, या फिर सिर्फ मार्किंग कर देना है बस पेपर में? देखो बेटा, अगर तो आपकी डायग्राम आंसर शीट में फिट हो रही है, जैसे ये वाली डायग्राम इजीली फिट हो जाएगी. सो अगर तो ये फिट हो रही है देन यू शुड मेक इट टू स्केल. अगर आपकी डायग्राम जो है वो बड़ी बन रही है आंसर शीट से, तो फिर उस केस में आप एक रफ डायग्राम बना के उसे शो कर सकते हो कि डिस्टेंसेस इतने इतने हैं. ओके सर. बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए सर, वो एग्जामिनर राइट में वही देखेंगे. Yes, that's right. The calculation should be correct. सर ये कितने मार्क का आता है क्वेश्चन? This will be 25 marks बेटा. अगर ऐसा सवाल आएगा तो 25 marks. सर ये सही है, स्टार वाले से जल्दी अच्छा ये. स्टार वाला पूरा ब्रह्मांड घुमा दे रहा है सर. नहीं बेटा, बस वो असाइनमेंट चेंज क्यों नहीं कर रहे सिलेबस? ना ही हम चार्टवा का भी यूज कर रहे हैं, ना ही ये सब कर रहे हैं, पर सिलेबस चेंज नहीं हो रहा. Okay, all right. So I'm closing this now beta. Okay, great. So this was the topic planned for today. So covered from my side. अब एक डाउट था बेटा, हरप्रीत को एक डाउट था कि हम वो वेस्टर्ली डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं, वो भी मैं अभी बता देता हूँ. सर एक चार्ट में मर्केटर, ये चार्ट वाले में एक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो एक बार जो बेटा मर्केटर चार्ट पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में ना अलग अलग टाइप के सवाल वहां दिए हैं. कॉन्सेप्ट जो है, बेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही यूज होना है. सो जस्ट हैव ए लुक एट दोज असाइनमेंट क्वेश्चन एंड उनका सोल्यूशन आप देखो. अगर फिर भी डाउट आता है तो कल डिस्कस कर लेंगे. होपफुली डाउट विल नॉट कम. यस, स्केल का भी कोई ठीक है सर, मैं उसको करते हैं फिर देखते हैं. राइट. So just let me open up assignment number 4. सर निमोनिक चार्ट का क्वेश्चन, उसका भी चार्ट बनता है ना सर? ओके बेटा, बहुत पहले एक सवाल आया था. long time back there was a question which came on mnemonic chart.
सो सर अगर थ्योरी आपको क्वेश्चन मिले तो मुझे भेजना, अगर वो क्वेश्चन आपको मिले ना निमोनिक चार्ट का तो मुझे भेजना. सो आई विल ट्राई टू पुट द सॉल्यूशन एंड देन सेंड इट टू यू. सर थ्योरी भी आते हैं इसका, तो थ्योरी का वो देंगे क्या सर, सेंड कुछ देंगे क्या टॉप में पढ़ने के लिए? बेटा मैंने ना थ्योरी की आपको एक असाइनमेंट भेजी हुई है जिसमें अबाउट 14-15 सवाल हैं. ओके, सो फॉर ए हेड स्टार्ट जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस. उनमें कुछ के आंसर मैंने एक दो के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं विच वर नॉट देयर इन द बुक. बाकी की मैंने बुक की रेफरेंस लिखी हुई है, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, चैप्टर नंबर. सो जस्ट गो थ्रू देम वंस. अगर किसी में डाउट आता है आस्क मी, एंड अदरवाइज दैट शुड गिव यू ए हेड स्टार्ट. I won't say that it will cover all 100%, but it should cover 80 to 90% of the questions which are coming. मैं चार्ट सर्च लेटेस्ट असाइनमेंट में जो चार्ट्स वगैरह के भी हैं उसमें ये न्यूमेरिक चार्ट्स क्या चार्ट्स वगैरह हैं, सो That's right. Routing chart was there. Right. Okay बेटा, so एक ये असाइनमेंट में डाउट था, so let me show that. ओके बेटा, इस क्वेश्चन में ही डाउट आ रहा था ना? यस ये वाला इसी में था ना? ओके, अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन बना रहा हूँ बेटा. ये मैंने ब्लू कलर में ग्रीनविच मेरिडियन बना दिया. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है. और जो हमारी बॉडी है बेटा, लेट अस मेक दैट इन ग्रीन. ये मेरा बॉडी का मेरिडियन है पासिंग थ्रू बॉडी एक्स. अब इन दोनों में जो ये एंगल है बेटा, दिस एंगल हियर is 50 degrees because the GHG of the body is 50 and this is measured in the westerly direction. अब ये westerly direction क्यों है? ये साउथ पोल है बेटा. साउथ पोल पे westerly direction is represented by anti clockwise direction. ओके, जैसे अगर मैं इसका पूरा सर्कल बनाऊं, let me make the full declination circle. ये मैं पूरा declination circle बना देता हूं यहाँ पे. Going outside also. ये इसका पूरा डेक्लिनेशन सर्कल आ गया बेटा. ये बॉडी हमारे मेरिडियन को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, एंड इट विल ऑलवेज क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक दिस. ये वेस्टर्ली डायरेक्शन है. सो यू सी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द वेस्टर्ली डायरेक्शन लुकिंग फ्रॉम साउथ पोल. अगर यही नॉर्थ पोल होता तो ये क्लॉकवाइज हो जाती. क्लॉकवाइज होता है. यस ओके सर, राइट. वही कंफ्यूजन हो गया था कि मतलब ये तो उस साइड होना चाहिए ना जहाँ पे एक्स है, वो जी होना चाहिए, और जो जी है वो एक्स होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था. ओके सर, साउथ पोल है इसकी वजह से हुआ. ओके सर, क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू सर. यस सर, थैंक यू सर. ऑल राइट बेटा. ओके सर ये न्यूमोनिक चार्ट वाला ग्रुप में डाला है क्वेश्चन. ओके ठीक है बेटा, लेट मी हैव विल लुक एट दैट क्वेश्चन. मैं उसका लेट मी सी इफ आई कैन पोस्ट दैट सॉल्यूशन. मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना के ग्रुप पे भेजता हूँ. सर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 20, सर वहाँ पे आई हैव टेकन दैट एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला एंड फाउंड आउट दिस लैटिट्यूड, तो दैट्स एक्सेप्टेबल. क्वेश्चन नंबर 20. ओके, इसमें बॉडी राइज कर रही है ना? हाँ जी सर. एट दिस पॉइंट यू हैव टेकन द एम्पलीट्यूड फार्मूला. यस सर, परफेक्टली ओके बेटा. दैट्स वो मेरे दिमाग में पहले आया तो फिर वो कर लिया सर मैंने. यस यू कैन डू दैट. जो एम्पलीट्यूड फार्मूला बट फिर ऐसा नहीं हो कि वो एग्जामिनर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा और मैंने फार्मूला से कर दिया तो. नहीं बेटा, नो नॉट एट ऑल. आप बड़ी इजीली विदाउट एनी डाउट आप एम्पलीट्यूड फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हो, बिकॉज एम्पलीट्यूड फार्मूला इज नथिंग बट नेपियर रूल अप्लाइड टू दिस ट्रायंगल. यस सर. So you can use that beta without any confusion and doubt. You please use. It will work. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, all right beta. So आज के लिए let's break out for today. And yes, जो भी आपके बाकी के doubts हैं वो कल के सेशन में कवर करते हैं बेटा. Okay sir. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. आपको कुछ बचा नहीं है आपके तरफ से टॉपिक? नहीं बेटा, मेरी तरफ से टॉपिक्स कवर्ड अप है. ओनली आपके जो डाउट्स आएंगे, अगर उन डाउट्स के लिए कुछ और चीज जरूरत होगी तो वो मैं करवा दूंगा.
Otherwise, from my side, it is covered now. So you should be able to attempt the question part B and part C of all the past papers. तो पैसेज प्लानिंग का जो दिया बस वही पढ़े हैं कि कुछ बताएंगे आप भी? पैसेज प्लानिंग का आई थिंक विष्णु सर ने एक PDF आपके साथ शेयर किया होगा. यस सर, यस सर. Just keep that in mind. Keep that in mind, बेटा. वो जो पॉइंट्स वहां लिख रखे हैं उनको फॉलो करो and do the passage planning. That should suffice. ओके सर. सर लैटिट्यूड में सर अप्रोप्रिएट स्केल एट इक्वेटर क्या होगा? Didn't get you, बेटा. Ask again. सर ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, कैन यू चेक दैट सर? Okay. I will see that, बेटा. I'll see that. And अगर मेरे पास पॉसिबल हुआ तो मैं उसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा. Don't worry. Only it is the question is the appropriate scale at the equator. They have not given the scale, right? Yes sir. Right. Okay. मैं डालता हूँ बेटा. I'll put it on the group. Just go through that solution. Okay sir. सर कल की क्लास के बाद स्पेयर क्लासें हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब ग्रुप में डाल दिया करोगे आपकी स्पेयर क्लास लगाने वाले हो या फिर कैसे है? बेटा अगर कल तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाते हैं सारे एंड वी आर डन विद द डाउट्स देन स्पेयर क्लासेस आर नॉट रिक्वायर्ड. अगर कल के कुछ डाउट्स बचते हैं तो फिर उनको स्पेयर क्लास में यूज कर लेंगे. हाँ ठीक है सर, कल ही डिसाइड होगा ना फिर तो. दैट्स राइट, दैट्स राइट. ओके ठीक है बेटा. सो लेट्स कॉल इट ऑफ फॉर टुडे. जो भी डाउट्स आपको आते हैं यू कैन कीप ऑन शेयरिंग देम ऑन द ग्रुप. एक पहले भी आपने क्वेश्चन डाला था, आई थिंक गिनी हैड पुट ए क्वेश्चन, वो मैंने देखा नहीं है. ओके आई विल सी दैट एंड आंसर इट. ओके सर. ओके सो ठीक है बेटा. सी यू टुमारो. टिल देन बाय बाय. ओके सर, बाय बाय. ओके बेटा.